All right, finally, good morning. Oh my God. Good morning. Finally made it. I was having trouble connecting devices. I don't know why my laptop had to act up. Ma'am is not here yet. I'm here, guys. Good morning. We'll start in a minute. Please let me know if I'm audible, I'm visible, and if the questions are audible and visible as well. मुझे आप बस इतना बता दो कि questions जो हैं वो clearly दिख रहे हैं or do you want me to increase the font size a little bit? चलो ठीक है. Good morning, good morning, good morning. All right, I'll just quickly message in the group saying class has started. All right. Good morning, good morning, good morning. My name is Hafsa Malik. Welcome to my YouTube channel. What we are going to do today is we are going to do the net paper and I'm basically going to tell you कि आप challenge क्या करेंगे, क्या नहीं challenge आप करेंगे and what is the correct key for which code and all of that. ठीक है? तो आप item का code I will read out and then you can note down whether the key is correct or not and we can also discuss whether you got the right answer or not. Most of you have done well and I'm quite happy with most of your performances. Some of you have done really badly and there are no excuses for it. ठीक है? तो हाँ, we'll just look at the paper and we'll quickly go through what the correct keys are. तो यहाँ पे आपका ये basically MCQ क्लास जैसा नहीं है. क्विक हम डिस्कशन करेंगे कि पेपर में सही क्या है क्या नहीं है. I will go ahead and start off. If you're all good to go, let's start. All right, if you don't know me, I'm an educator on UNACADEMY. More on that later. Let's get started. So 51 should be your first क्वेश्चन आइडियली. ठीक है. और यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का लर्नर का पेपर लिया है. सो फर्स्ट कोड इज 332201. कंप्यूटर असिस्टेड टेस्टिंग इज प्रिंसिपली बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी. This is correct. Okay, paper pencil based was around classical test theory. Item response theory is basically the core of computer based testing. बाकी के options काफी irrelevant हैं. Key also says the same. तो ये correct है. No problems here whatsoever. You can tell me whether you got it right or whether you got it wrong. ठीक है. आपका ये सही आया गलत आया आप बता सकते हैं. And if you have any doubt in a question whether to challenge it or not, you can ask me. There are 2 or 3 key mistakes in my opinion. 2 में चांस है मिलने का, तीसरे में मिलेगा नहीं. We'll go ahead and we'll see that also. वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन चैलेंज करना है, कहाँ से आपको वो रिसोर्सेज भी मिलेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी. ठीक है. ओके. चलिए, तो आइडेंटिफाई द प्लॉजिबल लॉजिक फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डिविएशन आईक्यू. डिविएशन आईक्यू इंट्रोड्यूस क्यों हुआ? डिविएशन आईक्यू इस वजह से इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि बच्चों के लिए इंटेलिजेंस स्केल थी, अडल्ट्स के लिए नहीं थी. बच्चों का और अडल्ट्स का आईक्यू कंपेयर करना काफी डिफिकल्ट था. वी हैव डन दिस लाइक 200 टाइम्स इन क्लास. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. की भी यही कहती है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 32205. ओके, लास्ट के 4 डिजिट्स एक्चुअली आप या लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करें. 2205. ओके, ठीक है. चलिए, ऑल राइट, लेट्स गो. नो डाउट्स हियर. नो डाउट्स. नो डाउट. यू कैन टेल मी गाइस, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप सिंपली पूछ सकते हैं. At which difficulty level past proportion of the item can make the highest difference? इसका रिवर्स क्वेश्चन सेम है, 2020 से रिपीटेड है ये. इट्स बेसिकली आस्किंग यू फॉर व्हाट डिफिकल्टी लेवल द डिस्क्रिमिनेशन विल बी द हाईएस्ट. इट विल बी एट 0.50. की में भी यही दिया है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. ओके, आप एक्चुअली अपना पेपर लेके भी चेक कर सकते हो. गुड टू गो. Absolutely. 0.50 will be our correct answer. एंड में हम स्कोर्स टैली करेंगे. प्लीज टेल मी योर स्कोर्स इन द एंड. ठीक है. अभी आप देखो कि क्या हो रहा है, करेक्ट क्या है क्या नहीं है. चलिए, उसके बाद what do we have? Which components of psychoneuroimmunological system is not affected by glucocorticoids? You got to understand that glucocorticoids are basically cortisol and other steroid hormones and stuff. Okay. Now, it suppresses immunity, है ना? And then इसका hippocampal neuron degeneration. That word has been used a lot in this paper, which is correct. What happens? Have I told you that high glucose is related to brain degeneration also? हमें पता है. Alzheimer's may be actually blood glucose is often found to be high. High level of corticosteroids in the body.
यस, ओके ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का इसके साथ कुछ नहीं है ना, दिस इज रिलेटेड टू एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी इज द वन गिविंग आउट ट्रॉपिक हॉर्मोन्स। तो ये एक्चुअली काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, की भी करेक्ट है। दिस इज 2211 एंडिंग। Okay, all right. So posterior pituitary will be your correct answer because it's not relevant. It's not related. Posterior pituitary, you have oxytocin and vasopressin. उस पे भी क्वेश्चन आया है, वो तो रोज क्लास में करते हैं। चलिए, when an experimenter wishes to ensure equal representation of a highly correlated variable with dependent variable of all levels of independent variable, ये आपको यहाँ पे क्लू मिल जाना चाहिए. If we want to basically have the same kind of, we want to minimize क्या कहते हैं ऑर्डर का एरर या ऐसे इफेक्ट्स, एनी कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, कैन आई डू रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन? Latin square is a special form of repeated measure design only, where the number of rows, number of columns has to be equal. याद है आपको? तो यहाँ पे वो हमें दिया नहीं है. This is a randomized block design where each group will get the same treatment, in the sense that each group will be treated the same. We will not know which group is getting which treatment and what are the specifics of it. A randomized block design, randomized groups नहीं, randomized block design. Correct answer given in key also. 2217, option D is correct. You can come back here and you can later check the keys as well. चलिए, उसके बाद टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन विच वैलिडेशन क्राइटेरियन इज द परफॉर्मेंस इन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग. दिस इज सपोज टू बी अचीवमेंट. ये करेक्ट है. ये आपको कहीं से भी रेफरेंस एनसीईआरटी बुक से भी मिलेगी. यहाँ दिया है एप्टीट्यूड, ये गलत है. की इज इनकरेक्ट, ये आप प्लीज चैलेंज करो. ओके. The type of psychological test in which validation criterion is the performance in specialization training. मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग. In aptitude we are checking the potential for performance, we are not checking for the outcome of any training. समझ रहे हैं आप? तो ये गलत है. आप हाँ, आप इसको चैलेंज करो, आपको मिलेगा. Most of you must have marked A, you will get your 2 marks. ठीक है. एंड उससे कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं होगा बिकॉज मोस्ट पीपल मस्ट हैव गॉट दिस करेक्ट. ठीक है. एंड करेक्ट उन्हीं को मिलता है गाइज, वो मार्क्स उन्हीं को मिलते हैं जिन्होंने करेक्ट ऑप्शन मार्क किया हो. सबको नहीं मिलते हैं. तो ये क्या है? 32225, 332225 इसका की इनकरेक्ट है. आप चैलेंज करो. आई विल मार्क विद रेड ऑल्सो. चलो ठीक है. देन व्हाट डू वी हैव? आइडेंटिफाई द थियोरिस्ट हु स्टेटेड द फॉलोइंग. When we have passed beyond individualizing, then we shall be real persons. Ego is the helper, ego is the bar. These are sayings of the mother. है ना? श्री औरोबिंदो जिनके फॉलोअर थे, जिन्होंने श्री औरोबिंदो आश्रम एक्चुअली सेटअप करने में हेल्प की है. राइट. तो वी विल, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव मार्क्ड करेक्ट. तो श्री औरोबिंदो आएगा आंसर. की में भी यही है. दिस इज 2232. ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड इट इज करेक्ट. ओके. चलिए, द सी ऑप्शन. अननोन क्वेश्चंस में काफी बार सी ऑप्शन करेक्ट होता है. एनीवे, लेट्स नॉट बॉदर विद दैट. आई एम हियर टू गिव यू प्रॉपर नॉलेज बेस्ड एक्सप्लेनेशन. इंडिजनाइजेशन. इंडिजनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे कल्चर के लिए हम कुछ बनाएंगे. Okay, that means that application of outer stuff for our culture was not great. So we are overcoming the difficulty on explaining the phenomena in a given culture. समझ रहे हैं आप? Difficulty in establishing reliability, not promotion of native culture, no. Ensuring objectivity in research, no. इंडिजनाइजेशन का मतलब है कि जो बाहर से हम रिसर्च ला रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारे कल्चर पे अप्लाई नहीं होता है. तो हम अपने कल्चर के हिसाब से चीजें एक्सप्लेन करना चाहते हैं. इसी को कहते हैं इंडिजनाइजेशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इट इज एब्सोल्युटली राइट. मैं आपको की के हिसाब से भी बता रही हूँ. आई विल टेल यू एनीवेयर वेयर द की इज इनकरेक्ट. Myelin sheath which insulates most axons in CNS is produced by what? सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं, सबको पता है ना? ये तो बेसिक्स है. बेसिक्स है. आप देखोगे कितने बेसिक्स क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? आर वी गुड टू गो गाइस? एनीवेयर वेयर यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क. आप बीच में पूछ सकते हो. आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. चलिए, द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द लिम्बिक सिस्टम. दिस एरिया लाइक दिस इट इज ड्रॉन. दैट इज द सिंगुलेट जाइरस, द सिंगुलेट कॉर्टेक्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है. इसके बाद क्या है? What did I do? Did I move forward too much? Okay, correct. The human retina contains approximately. हमें पता है कि rods कोन से काफी ज्यादा होती हैं.
रॉड सेल्स कोन सेल से ज्यादा होती हैं, काफी ज्यादा होती हैं. अराउंड 120 million rods and around 6 to 7 million cones is the correct answer. All right, okay. चलिए, keys correct, keys absolutely correct over here. And EEG during non-REM sleep. Now this might sound very tricky, but हम देखते हैं कि क्या होता है. देखिए, can I say that आप डेल्टा के बगैर सारी वेव्स REM sleep में भी देखते हैं? मुझे लॉजिकली बताइए आप, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि REM sleep में, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में, we see all three of these waves? And the only one we see, especially during non-REM sleep, is delta. Can I say that? Absolutely. तो ये है करेक्ट आंसर आपका. लॉजिकली भी ये बिल्कुल करेक्ट है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो नॉन रेम में आप डेल्टा पिक करेंगे. इफ यू पिक एनीथिंग एल्स, वो बाद में, scoldings and all बाद में. अभी we'll go ahead and see what has happened. One of the primary objectives for developing the first Wechsler scale was to meet the need for an effective adult scale. ठीक है, क्योंकि जो वेशलर, जो बीने की स्केल थी, वो बच्चों के लिए ही थी ना. वी हैव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स, वी हैव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स इन क्लास. फेस ये तो बाकी के सब ऑप्शंस काफी इजी हैं गाइस, काफी इजी हैं, एंड दीज आर अटर रबिश ऑप्शंस ऑनेस्टली. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए ही करेक्ट होना है यहाँ पे. चलिए. A researcher interested to verify the effect of three independent variables on two dependent variables. The fact that we have two dependent variables is what is important here. तो मान कोवा नहीं होगा, अनकोवा नहीं होगा, अनोवा नहीं होगा, मनोवा होगा, right? Because we have, doesn't matter, we can have 4, 5, 6 independent variables. Because हमारे पास दो dependent variable हैं, हम मनोवा पिक करेंगे. कोवेरिएट नहीं है तो अनकोवा मानकोवा रेलेवेंट नहीं है. चलिए. Then what do we have? Process by which we translate sensory information into meaningful representation. Meaningful word and representation. Semantic encoding के through करते हैं ये. It is asking you for the cognitive process which allows you, जो हमें allow करता है sensory information को translate करने में, क्या चीज में? Meaningful information या meaningful representation. Pragmatic representation is how to actually carry out an action. This is the correct definition for option A. One minute, where am I going? हाँ जी, चलिए. So, which of these is not one of the Gestalt principles? Very, very simple again. कितना simple है ये? Similarity, proximity, common fate was added much later. लेकिन lateralization तो कुछ नहीं है ना? Nothing, no such thing as lateralization. Nothing such as lateralization. तो obviously you will pick option C. ये correct है, की भी correct है. All right. Then the somatic nervous system contains, ये आपको बेसिक्स में कराया जाता है, cranial and spinal nerves. Yes or no? Cranial and spinal nerves से ही आपका most of the somatic nervous system बनता है ना? Absolutely, absolutely. So option C is correct. All right? हाँ जी, हाँ जी. चलिए. पॉजिटिव पैराडाइम सब्सक्राइब्स टू पॉजिटिविस्ट. तो पॉजिटिविज्म क्या होता है? ये भी बेसिक क्वेश्चन है. सोशल कंस्ट्रक्शन, नो. ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट रियलिटी, यस. हम कुछ भी करें, हमारे बगैर भी नॉलेज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? एब्सोल्युटली, ऑप्शन बी इज करेक्ट. और आपको आगे देखने, मेंटेनिंग पॉजिटिविटी इन रिसर्च, नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली सिली. फेनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस क्वालिटेटिव है. सोशल कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो related to constructionism, not positivism. So, observer independent reality, single reality, we only discover things, we do not create in positivism. Social constructionist approach would allow cultural what? Diversity ना. सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म सेज कि अपने अपने कल्चर की एक एक रियलिटी, मतलब अलग अलग कल्चर्स की अलग अलग रियलिटीज, हर कल्चर की अपनी रियलिटी. दैट मीन्स डाइवर्सिटी, सो मेनी रियलिटीज. Diversity is correct. Hegemony means some kind of, being the boss or whatever. Homogeneity doesn't make sense because this is not some universal law. कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है ये जो आप कहेंगे होमोजेनिटी या इनवेरियंस. ये क्वांटिटेटिव में आएगा. सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म इज नॉट क्वांटिटेटिव.
Sensation seeking among adolescents is best described by. यहाँ पे adolescence word is just there to fool you, has nothing to do. Sensation seeking का मतलब बताइए क्या है? Can I say looking for new experiences? Sensation seeking का मतलब है looking for new experiences. नॉवल है, नोबल नहीं है. NOVEL. जकरमैन की सेंसेशन सीकिंग थियरी याद कीजिए. द मीनिंग ऑफ सेंसेशन सीकिंग इज लुकिंग फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, एक्साइटमेंट, ठीक है, लो बोर्डम, ससेप्टेबिलिटी, इनहिबिशन, वो 4-5 फैक्टर्स हैं, ये बाकी नहीं है, ठीक है. ये आपको एडोलेसेंट वर्ड सिंपली यहाँ पे दिया है एंड दे ट्राई टू फूल यू. इफ यू गॉट फूल्ड, ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम. बट लुकिंग फॉर नॉवल एक्सपीरियंसेस इज द मीनिंग ऑफ सेंसेशन सीकिंग. चलिए, absolutely. B is correct and B is given in the key as well. What type of a question is the following? Why did you go to the cinema last night? If I actually convert this, या अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, I can say what was your reason for going to the cinema last night? क्यों गए आप? आप क्यों गए मतलब what was your motivation to go? Not what was your opinion. Opinion ये होता है मूवी आपको पसंद आई नहीं आई. Fact is you went. Knowledge has nothing to do with this. Motivation. Why did you go? What was your motivation to go? What was your drive or what was your reason to go? Motivation. Very, very simple questions, guys. Very, very simple questions. I'm sorry if you didn't do well. Just try to study, try to revise properly. कुछ like rocket science नहीं है. Anyway, critical perspective, critical paradigm पे पूछा है आपको. We know that critical paradigm is also known as the feminist paradigm. Critical paradigm को feminist paradigm भी कहते हैं, नहीं कहते हैं? कहते हैं, आपको पढ़ाया है, यूनिट 1 में है ये. Okay, चलो. Then what does it say? Research has to smash myths and empower people to change society. This is relevant ना? हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है ना, हिस्टोरिकल रियलिज्म याद है आपको? हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है तो वी हैव टू एम्पावर डिफरेंट पीपल. Nobody else is saying anything. I suppose others are marking. Sachin doesn't have to mark anything. Reality is stable and subject to natural laws. Natural laws नहीं, natural laws natural science में आता है. कोई natural laws नहीं है. This talks about how there was injustice with people. Research does not subscribe to the view. हाँ, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे. Later we'll do in-depth discussion later. Informed by a theory that unveils illusion. Correct. Expose false beliefs which people have held and therefore kept themselves in power. तो A, C and D related हैं. ये कह रहा है आपको does not subscribe, does not relate. तो ऑप्शन B is correct. चलिए. A researcher using a group of 10 subjects under 4 conditions repeatedly. Repeated measure design है. 10 subjects हैं 4 conditions में. What will be the degree of freedom? तो आप मुझे बताइए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला is n-1 into k-1. Okay? That means 9 into 3. That means 27. And that is the correct answer as well. ये correct answer है आपका. They are very, very easy. Question paper is very easy. Anybody who got in 50s, I'm sorry, but you have not studied. Or you have very, very bad exam anxiety and you need to do something about it. नहीं तो आप कितना भी पढ़ो नहीं होगा. Anyway, psychological research does not allow for one of the following activities. Psychological ethics में कौन सा नहीं आएगा? Debriefing आएगा, maintaining confidentiality, non-granting permission to withdraw. We would like this very much, but ये गलत है. हमें परमिशन देना है पार्टिसिपेंट को विड्रॉ करने के लिए. वो चाहे तो उठ के जा सकते हैं कभी भी. यू कैन नॉट होल्ड देम बैक. ओके, सो दिस इज नॉट अलाउड. चलिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट. 2690. In a normally distributed group, an examinee scores 1 standard deviation above the mean. +1 standard deviation पे बताइए percentile rank क्या होती है? Percentile rank होती है 84. यहाँ पे परसेंटाइल रैंक 50 होती है, यहाँ पे 84, फिर 98 +2 पे +1 0 -1 -2 and so on, and 100 +3 पे. ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलिए. Which of the following statements does not apply to normal probability curve? कौन सी चीज normal probability curve पे apply नहीं होती है? Bilaterally symmetrical correct, bell shaped correct, skewness is 0, kurtosis is not 0, it's around 3.
ओके, कर्टोसिस 0 नहीं हो सकता, मीसोकर्टिक कर्व है ये। ऑप्शन डी आपका आंसर है यहाँ पे। आई शुड नॉट वन। Qualitative research can follow several approaches. Identify which is contrary to the assumption of qualitative research. Okay. Now here we are saying approaches to knowledge. That means paradigm. Realist is an ontology and not an approach to knowledge. Approach to knowledge has to be at least epistemology. तो आपको यहाँ पे positivist paradigm choose करना है because that will include epistemology also. ठीक है? Positivist qualitative में नहीं आता है. Realist सिर्फ एक ontology है. ये एक knowledge paradigm नहीं है. तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है 2700 एंड दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू की ऑल्सो. Dash is a measure of dispersion that considers all scores. Range doesn't, quartile deviation doesn't, interquartile deviation also doesn't. This is Q3 minus Q1 and this is Q3 minus Q1 by 2. Average deviation considers all scores, absolute scores. Option C is correct. What symbol standard regression coefficient is usually depicted? It is beta. Beta is your standard regression coefficient symbol. Then 2731, as per threshold hypothesis. Okay, tell me, even new learners can actually do this. Threshold hypothesis says moderate or low correlation, not Getzel and Jackson. Threshold hypothesis. थ्रेशोल्ड नॉट गेट्जेल एंड जैक्सन. मैं गिलफर्ड की थ्योरी की बात कर रही हूँ, गिलफर्ड की हाइपोथेसिस जो है. ओके, आई एम वेटिंग. आई एम आस्किंग समथिंग, प्लीज रिस्पॉन्ड. मैंने जो पूछा है आपको उस पर रिस्पॉन्ड करो. आई एम आस्किंग यू, डिड गिलफर्ड से देयर इज अ मॉडरेट कोरिलेशन और डिड ही से दैट देयर इज अ लो कोरिलेशन? He said there is a moderate positive correlation up till the threshold. Getzel and Jackson said overall there is a low positive correlation between intelligence and creativity. So modest positive correlation between below the threshold. Option B is your correct answer. Okay. Weak positive correlation is by Getzel and Jackson, and they have never spoken about a threshold. वो 0.26 का Getzel and Jackson का है. That is not, and there is no mention of, हाँ जी, there is no mention of threshold. चलिए, Gardner's theory of intelligence posits that a person is introspective, self-reflective, understands strengths and weaknesses, intrapersonal intelligence. अपने आप को समझते हैं. For those of you who mark naturalistic intelligence thinking I am also part of the nature, don't do such things. 2742, crystallized intelligence includes learned knowledge and skills. Very, very easy. Option A, correct. प्रोडक्ट अप्रोच टू क्रिएटिविटी, ये भी क्लास में बेसिक्स में आपको कराया जाता है. प्रोडक्ट अप्रोच टू क्रिएटिविटी प्राइमरीली फोकसेस ऑन व्हाट इज क्रिएटिव. प्रोडक्ट इज एन ऑब्जेक्ट ना, टैंजिबल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, नहीं कह सकते? टैंजिबल ऑब्जेक्ट गाइस. ओके, ऑलराइट. That means what is considered object, what is considered to be creative, how people arrive at creative ideas, process, how does environment shape creativity, press, what type of people are creative, person approach. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है. A bell was sounded by Pablo and then 2 minutes later a plate of meat powder was presented. There is a 2 minute gap. Okay, 2 minute gap. Gap किसमें होती है? Delay, trace, backward, forward. Trace conditioning में ना, trace conditioning में delay में there is overlap. So if there is a gap between the conditioned stimulus and the unconditioned stimulus, this is trace conditioning. Emotionally arousing stimuli have also found to lead to amnesia. This is actually emotionally traumatic, not arousing. गलत word use किया है. Okay, all right. Even though no physical damage has occurred. So emotionally traumatic events and then retrograde amnesia will be correct. ओके सचिन, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, देन रेट्रोग्रेड एमनीजिया विल बी करेक्ट, लेकिन इन्होंने वर्ड गलत यूज किया है. इमोशनली अराउजिंग नहीं, इमोशनली अराउजिंग कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ट्रॉमा लीड्स टू फॉरगेटिंग. Okay, I checked flash bulb memory repression also, but this doesn't hold out.
Option B seems like a better option. This is what is given in key also. So no need to challenge this. Process of chunking 2771. चंकिंग में क्या होता है? चंकिंग में होता ये है कि हमारी STM शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी इंक्रीज होती है. Option C is correct. That's what's given in the key as well. Psychologists define dash as long-lasting change in behavior influenced by experience. Learning. छोटे बच्चों के questions. Option C is correct. 2782. Student employees are required to work in teams because it is believed that performance will be better in teams. The presence of others increases our performance. This is known as social facilitation. This is the definition given by Norman Triplett. Option A correct होगा 2950. Which of the following statements reflects the argument made by cognitive social learning theory? ये किसकी theory है? Bandura की theory है. I feel like I'm talking to myself. But okay, Bandura की theory है ना? Now, social construction is his theory is based on anger and aggression. Aggression, not morality. वो जो है, what is it called? Something dehumanization, no, not moral justification. वो अलग है. That is not this theory. वो social learning theory नहीं है. Now ये relevant नहीं है, moral behavior relevant नहीं है, ये relevant नहीं है. The only one that is relevant here, self efficacy में self regulation आता है, which is related to the social learning theory. ठीक है? Very very good, very good. Only option A can be correct here. बाकी तो relevant भी नहीं है. 90. Robbers cave experiment. Sheriff showed the value of dash in reducing prejudice. ये directly सब copy paste है class से. मैं क्या कहूँ? You guys, I don't know if you didn't study or what, or did you study subordinate, nahi, superordinate goals. What am I doing? Superordinate goals, right? Goals that are greater than the issues of both the groups who are fighting for scarce resources. चलिए ठीक है. So my mouse stopped working all of a sudden. I don't know what happened. सो आई ग्रुप थिंक में आकर ग्रुप थिंक कब कब होता है ये हम हमेशा करते हैं कि मैं आपके लिए शीट पे समराइज भी कर देती हूँ. मेंबर्स फील दे कैन नॉट फेल. करेक्ट. मेंबर्स मोटिवेशन इज लो. नॉट ट्रू. मेंबर्स डू नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस दैट दे डिफर फ्रॉम देयर ओन ग्रुप्स. करेक्ट. मेंबर्स स्टीरियोटाइप एनिमी एज वीक. एब्सोल्युटली करेक्ट. A, C and D. Yeah, now I really feel कि कोई classes देख के questions बना रहा है. Last year it was 85. This year I feel like 95 or maybe all 100 questions. 95. I want to exclude that one stupid paragraph. 95 questions are from class, guys. तो अगर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं difficult है कैसे करें? Come on, yeah. Coronary heart disease से क्या क्या linked है? This is from your stress chapter. This time they have given a lot of weightage to health psychology. हेल्थ साइकोलॉजी को काफी वेटेज इस बार मिली है. आई शो यू हाउ. तो देखिए, होम्स एंड राहे मॉडल. कैटास्ट्रोफीज एंड डेली हैसल्स बोथ कंट्रीब्यूट टू डिजीज. कैन आई से दैट? होम्स एंड राहे का मॉडल याद कीजिए. स्ट्रेस मॉडल ऑफ चेंज इवेंट्स, लाइफ चेंज इवेंट्स, LCU. उसमें कैटास्ट्रोफी भी आती है, मतलब मेजर इवेंट्स एंड हैसल्स, डेली हैसल्स. मेजर लाइफ इवेंट्स, टाइप ए पर्सनैलिटी, लो मोटिवेशन हैज नथिंग टू डू विद दिस. A, B, C and D. करेक्ट इन द की ऑल्सो. इसके बाद क्या? नंबर 93, 3004. Health promoting lifestyle. Now, when people sent in half and half of this question, it got very confusing. अभी health promoting lifestyle में आप options देख के ये decide करना है कि what are things that actually promote a good lifestyle. Exercising occasionally, नहीं regularly. Engaging only in protected and safe sex. Correct. Maintaining weight. What if somebody's weight is 200 kg? तो इनको maintain करना चाहिए. Maintaining नहीं. Some people will need to lose also. Okay. And weight isn't the only indicator of health, and weight isn't a great indicator of health unless someone is obese. ठीक है. मतलब किसी का वेट 60 है, किसी का 65 है, दोनों की हेल्थ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगी. ईटिंग बैलेंस्ड मील्स एब्सोल्युटली करेक्ट. वेयरिंग सीट बेल्ट्स एंड हेलमेट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. सो B, D and E only. Option B is correct. It is correct.
All right. Which of the following are not the attributes of mindfulness? कौन से यहाँ पे mindfulness के attributes नहीं है? See, patience, obviously, you're doing mindfulness meditation without judgment. You will not be judging anything. You will trust yourself, you will accept things the way they are, and there is detachment and only detachment when it comes to any Eastern perspective. Mindfulness Eastern है, guys, Western नहीं है. तो ना judging, ना attachment. What do we have? B and E. Ma'am, will you provide this PDF in Telegram group? No. I'll be doing this on UNACADEMY, then you can download the PDF. Which of the following about acculturation is not correct? Acculturation, enculturation भी हमने किया है revision course में. Acculturation is basically when people move to a new culture and they start adapting the values of that particular culture. ठीक है? तो it includes sticking to one's own beliefs. नहीं, you try to mingle and you try to adopt the value of the new culture. Displaying prejudice नहीं, ये तो नहीं आता है. Adopting new ways, balancing between, actually balance होता नहीं है, but these are your two only viable options. Often the culture of the person who's actually moving to a new culture, उनका पुराना culture lose out हो जाता है, lost हो जाता है. तो C and D, क्योंकि बाकी के options बिल्कुल relevant नहीं है. Not correct. A and B only. Option B is correct. Managing weight would be suitable option, ma'am. Some people might reduce, some people might need to reduce weight. We don't know weight management, is it always going to be helpful or not? Although it should have been added, it should have been included. But looking at the options, you have to choose the most viable option. ठीक है? Weight management could have been added, but नहीं किया है add. So we have to go by the most viable option. Diffusion of responsibility, इसमें एक mistake है guys, ये आप challenge करो. इसमें सबको marks मिल सकते हैं. Question number 3047. Diffusion of responsibility is a hypothesized cause of. I will mark with red. Key is given as identity formation and pro-social behavior. This is wrong. This is very, very wrong. Diffusion of responsibility leads to bystander effect and sharing behavior. In the sense, ये सब लोग same behavior दिखाते हैं and ये बिल्कुल help नहीं करते हैं. Pro-social नहीं, they don't help. C and E should be correct, which is not an option here at all. So go ahead and challenge. आपको Barron book से proof मिलेगा. For the older one, you will get from NCERT, AK Singh, anywhere. Barron social psychology से आपको proof यहाँ पे मिलेगा. Okay? Attach कर देना. First page of the book as well. And then go ahead and attach your, bystanders apathy. हाँ, that diffusion of responsibility directly causes bystanders apathy. And not compliance is not relevant here because they don't really, it could have said conformity. Could have said conformity. So sharing behavior in the sense that they are all sharing the same behavior, or it should have been C only. Pro social तो नहीं होगा ना, identity formation इसकी वजह से होगा. चलिए, let's go. मैम की में B and C है, गलत है वो. की में बी एंड सी है. हाँ, गलत है. प्रो सोशल बिहेवियर नहीं है. डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से हम प्रो सोशल बिहेवियर नहीं दिखाएंगे. ये गलत है. ज्यादा से ज्यादा या तो ओनली सी होना चाहिए या तो ई होना चाहिए. बाय शेयरिंग बिहेवियर आई एम अंडरस्टैंडिंग कि सभी लोग सेम बिहेवियर दिखा के हेल्प नहीं कर रहे हैं. बट मैम डजंट bystander effect occur because of everyone? That's diffusion of responsibility. Go and read the theory, please. Diffusion of responsibility causes bystanders apathy. समझ गए आप? First listen to what I am saying without talking. That's exactly what I am saying. Diffusion of responsibility से cause होता है bystander effect. Okay? Alright? समझ गए आप? नहीं समझे? Okay. Since option is not here, what will happen, ma'am? They should drop if there is no correct answer. Okay? Not pro-social behavior. Pro-social behavior is absolutely incorrect. In fact, due to diffusion of responsibilities, we don't show pro-social behavior. हम दिखाते नहीं हैं. तो how is it cause of pro-social behavior? Got it? Bystander effect is directly caused by diffusion of responsibility. And then they are all sharing behavior in a way.
एक्चुअली ओनली सी होना चाहिए, बट की गलत है। प्रो सोशल बिहेवियर नहीं आएगा। ओके, लेट्स गो। डिड वी मिस एनीथिंग हियर? नहीं, इट्स जस्ट द हिंदी। Systematic desensitization involves what? It involves not aversion therapy, reciprocal inhibition, anxiety hierarchies. Timeout is based on negative punishment. ये Skinner की theory पे based. BNC only, that's what's given in the key, correct. So, ma'am, we can claim as none of the above options. Go check Barron and see if there is any mention of sharing behavior by everybody who's looking. If you find for if you find for C and E both, you can put it in. I will take a look after class as well, but it should ideally be only C. So you will submit proof saying your key is incorrect, right? And then you will basically say कि ये सही होना चाहिए, है ना? हाँ जी, नहीं है, गलत है। ऑल राइट, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ रिसर्च? पर्पसेस ऑफ रिसर्च क्या होते हैं? देखिए, यहाँ पे आपको सिंपली एलिमिनेट करना है। मेकिंग अ डिस्कवरी इज समथिंग दैट अ साइंटिफिक डिस्कवरी और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इज मेंट टू डू. Psychology is a human science, so we don't make any discoveries, we actually construct knowledge. Making discovery नहीं आएगा, making invention नहीं आएगा. Attempting, so explaining something, describing something, filling a gap in knowledge, एंड जो पास थ्योरी है उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए. सो ए, सी एंड डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलिए, द मीन कैन बी मिसलीडिंग इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज. अगेन वेरी इजी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्क्यूनेस शुडंट बी देयर, है ना? Mean is going to be very, very highly affected if there is skewness. Large number of scores doesn't matter. Few extremely high valued scores. ये कहाँ पे होता है? ये positive skew में होता है. Few extremely low valued scores. ये negative skew में होता है. तो A, C and E. Where is it? Option C, absolutely correct. चलिए, all right. सोरनेस को डिफरेंट वर्ड्स में एक्सप्लेन. स्क्यूनेस, हाँ, एब्सोल्युटली. तो पेपर हैज बीन मेड बाय पीपल हु very limited knowledge of research. The central aspect of rational thinking. Rational thinking के formal thinking के तरीके बताइए. Deductive reasoning, inductive reasoning. Conduction logic क्या होता है? Reduction approach is not a formal way of logical reasoning. Neither is a paradigm. Induction and deduction only. A and B only. Syllogistic reasoning or formal logic. Formal logic is either deductive syllogism or it is inductive reasoning. ऑप्शन बी करेक्ट है. ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई हंगर रेगुलेटर्स? लेटरल हाइपोथैलेमस वेंट्रोमीडियल. गाइस, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है. बी एंड डी ओनली. ऑप्शन सी इज करेक्ट. दिस इज राइट. Identify the posterior pituitary hormones. What do we have? Oxytocin and vasopressin. C and E only. Option D is correct. Identify the indices of item validity. Item validity का दूसरा नाम बताइए. Nobody knows? Never mind. Item validity is also called item discrimination. So now from this point of view, let's look. Inter-item correlation आपको item discrimination value देगा नहीं. It will help you correlate one item with another, not one item with the whole response sheet. So you got to do item total or item remainder. Item total या item remainder करेंगे आप तो this will help you understand how you're scoring on other items. Do you belong in the high scoring or the low scoring group depending on your score on a particular item? Item pass proportion is nothing but item difficulty.
आइटम क्राइटेरियन कोरिलेशन, ओवरऑल आपके क्वेश्चनर से आपके आइटम सिंगल आइटम की कोरिलेशन, दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ चेकिंग आइटम डिस्क्रिमिनेशन. सो बी एंड डी ओनली, ऑप्शन सी इज करेक्ट. Viktor Frankl stated that, oh my God, logotherapy. Viktor Frankl, logotherapy. यहाँ आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. चलिए, dash refers to the capacity of the nervous system to perceive stimulus presented at an intensity below threshold. Subliminal perception की definition है, option C is correct. What is the median of the scores given below? आप arrange करेंगे, कितने scores हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you will add 8 plus, नहीं, 5. 5 plus 8 plus 12 plus 15 plus 20 plus 30 plus 30 plus 40. You have an even number. So you have to take the middle two numbers and divide them by 2. 15 plus 20 divided by 2 is 17.5. Option B is correct. 3117. ठीक है. ओके. ऑल राइट. ये तो देखते ही बन गया. वेरी प्राउड ऑफ यू. देखने से ही बन गया. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 107. 107 क्या है? Let's increase the size and let me know if the question is still visible to you. Name the test that can verify hypothesis that two related groups have been drawn from the same population. आपको paired sample का non-parametric equivalent पूछ रहा है. Paired samples can be used in only one test over here, Wilcoxon-Sandrank test. Right? Friedman's is for repeated measures ANOVA. ANOVA is not only to check whether people belong to the same population. You check for standard deviations, you evaluate, you compare means and so on. तो यहाँ पे उतना सीन नहीं है. You choose Wilcoxon-Sandrank test. I calculated mean. You're probably lost somewhere, or you don't pay attention to what is in front of you. There is no way anybody from my class should have scored below 80 on this paper. I feel like, kitna bhi effort karo, ultimately, like, I don't know what is wrong with kids. I don't know why they, act the way they do in exams. It's just so sad. Fourth force. Fourth force of psychology में क्या आता है बताइए? Psychology, counseling, same thing. Fourth wave is different. Fourth force is different. Fourth force में क्या आता है? Multicultural, positive, and so on and so forth. Third force is humanistic. Yeah? Multicultural. Option C is correct. Fourth wave was humanistic. Fourth force, the fifth force is social justice. The phenomenon of object permanence occurs in which stage? Occurs in the sensory motor stage. Option A is correct. Solution focused is no force, ma'am. No. Social justice and human values, वो fifth force है. Linguistic relativity hypothesis did this recently. Very, very easy. Language depends on thought, nahi. Thinking is shaped by language. This is also known as the linguistic determinism hypothesis. मतलब thinking हमारी जो होती है determinism, वो बनती है language से. ठीक है. यहाँ पे क्या propose किया है Wolf Sapir ने? They propose that thinking is shaped or formed by language. Which of the following does not describe the state of flow? Loss of self, correct. Oneness, feeling one with the experience. Clarity of action, correct. Does not describe internal talk. मतलब you will not keep thinking other things. ठीक है. Very, very easy. Very, very easy question. And please pay attention to whatever I am saying. Don't misquote me like somebody was just doing. You're not saying diffusion of responsibility is this. मुझे misquote कहीं नहीं करना. I'll scold. Or I'll get very, very angry. I see people from class explaining sometimes wrong and saying, oh, ma'am said this. No, guys, don't do that. Dash does not explain our obeying unjust commands of authority. हाँ, does not explain कि हम unjust commands कैसे authority के actually क्या करेंगे, obey करेंगे.
Now we've got to understand if we are habituated to following authority, we'll follow. कभी हम normative influence के लिए follow करते हैं, कभी हम इसलिए follow करते हैं, हमें लगता है कि दूसरों को हमसे better जानकारी है. Whereas genetic endowment is something else altogether. Okay? Genetic predisposition हमारी क्या है? Maybe sometimes we have a very strong moral sense. Therefore, we may not, or this doesn't in any way explain why we would obey unjust commands. तो तब हम नहीं obey करेंगे. ठीक है? अगर हमारा moral sense strong होता है, वो genetic कुछ component होता है, तो genetic endowment to obedience we might not have. ठीक है? Genetic predisposition to obedience. What did I do? Did I skip something? No. So far, how many did you guys get correct? Can someone tell me? अभी we're almost at around 75. अभी तक आपके सही कितने आए हैं? For those of you who are watching and calculating. No? Nothing? अच्छा चलो ठीक है. Dash is an impairment of language functioning caused by damage to the brain. This is aphasia. Option C, correct. Which theory includes environmental mastery as one of the dimensions of well-being? Carol Rifke six-dimension theory, where there is purpose, there is direction, and there is self-awareness and autonomy and वो सारी चीजें. ये तो बहुत बहुत easy है. Got two incorrect, ma'am. Okay, Sachin. I wish you had gone for the exam. I wish some of the older learners had gone. I feel like you guys would have got 95, 96 out of 100. Okay, the first responses that typically express when we are frustrated is, इसको किस एंगल से हम देखेंगे? इसको आपको डॉलर और मिलर के एंगल से देखना है. ठीक है? डॉलर और मिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो that will be a little bit better. That means that we are going to get angry when we are frustrated. Option B is correct. Okay, option B is option B is correct. चलिए. Now match the followings are actually very very easy. Very very easy. Now subjective frame of reference क्या होता है? Actualizing tendency wants to fulfill inner potentials. A is 2 and that is your answer. मैम क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर ए दिया है की में. सच में? एक मिनट वापस जाके चेक करते हैं. नहीं नहीं, आई हैव ऑलरेडी चेक द की. मैंने तो की चेक की है. मैं आपको बता रही हूँ की में क्या गलत है क्या सही है. 111. नहीं, बी ही है. बी ही है, मैंने चेक किया है. बी ही है. जाके वापस से चेक कर लीजिए. करेक्ट करेक्ट. बी है. हाँ पता है, आई हैव ऑलरेडी चेक. उतनी अभी मेरी मेमोरी खराब नहीं है. ठीक है. ऑर्गेनिज्मिक डी इज 1. सो ए इज 2 एंड डी इज 1 हो गया. इफ यू मैच एक्चुअली 1 ओवर हियर, यहाँ पे हो जाता है. इट्स वेरी वेरी, दे हैव गिवन वेरी वेरी इजी मैच द फॉलोइंग. काफी काफी इजी दिया है. चलिए. नाउ लेट्स सी हियर. Dopamine is a catecholamine, serotonin is an indolamine. So B is 1 and D is 3. कहाँ गया? B is 1 and D is 3 हो गया. उतना ही है. बाकी quaternary amine के साथ interact करता है acetylcholine. Glutamate is made up of amino acids. All of these are made up of amino acids. S. David, you will probably clear NET.
ठीक है? You will probably clear net. Yesterday I have taken a full video on it. Please go ahead and check it out. You can check. आप स्क्रीनशॉट लेके, एक्चुअली आई एम थिंकिंग ऑफ शेयरिंग yesterday's PDF. तो आप सब अपनी कैटेगरीज के लिए चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स का क्या आया है, एंड आप उस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है? If you want, हाँ, if you want, I'll basically do like a separate session on it as well. देखिए, early selection model was given by Collins Sherry, attenuation by Treisman, late model by Dush and Dush, and then multi-model by Johnson and Haynes, Johnston. तो attenuation Treisman कहाँ गया? B is 4, B is 4, and A is 2. So A is 2 and B is 4. Option B is correct. उसके बाद फ्लरिशिंग क्या होता है? फ्लरिशिंग इज अ स्टेट ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग. सेवरिंग इज लिविंग अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर अ लॉन्ग टाइम. ए इज 3 एंड बी इज 1. कहाँ गया? ऑप्शन बी. ओके. T cells do what kind of immunity and B cells do what kind of immunity? B cells bone marrow humoral immunity, मतलब antibodies देते हैं, ये antibody produce करते हैं. T cell mediated immunity. Phagocytes consume and antigen नहीं, यहाँ पे antibody आना चाहिए. This is wrong. Antibody आना चाहिए. Antibody distinguishes foreign cell, but you can do it easily with the help of the other options. So C is 1 and D is 3. C is 1, D is 3, and A is 4, and B is 2. Yeah, option B. Type of heuristics, means, and analysis. Analysis breaking down. A is 3 and B is 1. And then C is putting together elements. C is 4. A is 3, B is 1. Option B is correct. Okay. Then हमारे पास क्या है? Cognitive what? Now psychodynamic inner forces, humanistic self actualization आपका यहीं पे हो जाएगा. A is 3 and B is 4. Option C is correct. Social learning, learned drives, behavioristic, and then cognitive social learning. Oh God, इतने सारे मैचिंग एंड कितने इजी. आई फील लाइक इट गेट्स बोरिंग आफ्टर अ व्हाइल, लाइक मैं जब सॉल्व कर रही थी आई वाज लाइक अरे यार क्या है ये, इट्स सो सिंपल एंड इट्स नॉट फन ऑल्सो आफ्टर अ व्हाइल. सी, पेपर शुड बी चैलेंजिंग ऑल्सो. यू माइट थिंक, ah, what are you saying? Paper has to be challenging. Realistic conflict is competition for scarce resources. Is 2. That's done. हो गया. That's, you need to spend like 0.2 seconds on it जैसे आप क्लास में करते हो. उसके बाद relative deprivation is in comparison to other people we feel like we don't have enough. ठीक है. Social comparison is relating to self-esteem, comparing oneself to others. And then social identity is this, relative deprivation is this. Okay, चलिए. Again, very, very easy, very, very easy. Autism is a neurodevelopmental disorder. Alzheimer's is a neurocognitive disorder. A is 3 and B is 1. Are we done? Yes, we are done. Option A is right. Chali. Here again, there's a little bit of a mistake, but okay. Now, Clark Hull definitely drive. Henry Murray needs. Freud instinct. And then McClelland should also be need only in a way, but they put fantasy. So Clark Hull के लिए drive, where A is 2, B is 3, C is 1, and D is 4. Option A will be our correct answer.
करेक्ट स्तुति, एब्सोल्युटली, एज लॉन्ग एज यू लुक एट द अदर ऑप्शन सब ठीक है। इसके बाद चलिए सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी किसकी है, डेसी की है, सेल असेंबली हेब की है, कॉन्टैक्ट कंफर्ट इज बाय हैरी हार्लो एंड जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम बाय हांस सेलिये। A is 3 and C is 1. A is 3 and C is 1. Do we have anything else like that? No. Option B is correct. I hope this is the last match the following. Changes in thoughts over lifespan, developmental perspective is 3. हो गया. Option B is correct. चलो guys. उसके बाद never mind. इस बार यूनिट 1 को नहीं आया तो है positivism. I don't know what people saw in the paper. They said nothing was asked from unit 1 and unit 10. Unit 10 they have not asked, but then unit 1 they have asked. They have asked positivism twice. They have asked social constructionism. जो आपको कराते हैं क्लास में बिल्कुल वही पूछा है. They have asked unit 1 also. They have asked Sri Aurobindo's also. They have not asked typical Buddhism, Sufism, Hinduism. They have not asked that. Typical वाला नहीं पूछा है. See, again, social support hassles and this and that stress के बारे में पूछा है. So this, I suppose, yeah. हाँ, unit 10 से भी तो health psychology है. Correct. Comes in your unit 7 also and unit 10 also. Correct. So they have asked just the regular stuff they have not asked in the sense कि cyber psychology पे ज़्यादा focus नहीं है. And health strategy that focuses on providing education materials to people should be primary prevention. Having a group of friends is social support. A person exposed to severe stressor may experience event. Post traumatic stress disorder. Minor annoying events are hassles. ठीक है तो A कहाँ गया प्राइमरी प्रिवेंशन A is 3 ऑप्शन B is correct. चलिए दिस इज वन डिसेंट मैच द फॉलोइंग. जेड स्कोर का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है A is 4. ठीक है मीन 0 होता है स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होती है. मीन स्टैंडर्ड 9 मीन इज 9 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2. B is 3. तो A is 4 and B is 3. That basically gives you your answer. But T score में मीन 50 होता है, C is 1 and D is 10 में 5.5 होता है. Option A is correct. It's correct in the key also. All right. Now, exposure to prolonged stress इसकी sequence दीजिए. Let's try to understand basically what happens. This might have been confusing for some of you. See, last option is hippocampal cells will get degenerated. This is exactly how I would do this as a student also. अगर मैं एग्जाम लिखने जाती तो मैं ऐसे करती क्वेश्चन को. देखिए लास्ट ये होना है, कुछ डिजेनरेट हो रहा है, ठीक है तो ये ऑप्शन आप पहले रिमूव कर दो. तो देर इज ओनली अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए एंड सी. उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर रिलीज. वेयर डज इट बिगिन? एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज एसीटीएच, क्योंकि यहाँ पे ना हाइपोथैलेमस का मेंशन है ना आपके कॉर्टिकोट्रोपिन सीआरएफ का मेंशन है. तो यू विल स्टार्ट विद डी एंड इट विल एंड विद सी. आपको करना ही कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शन सी मार्क करना है. इट्स इजी. यू डोंट इवन नीड टू कैलकुलेट द होल सीक्वेंस. ठीक है हाँ आपको पूरा सीक्वेंस यहाँ पे नहीं करना है. एनीवे वी स्टार्ट विद एंटीरियर पिट्यूटरी. उसके बाद क्या होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एड्रीनल कॉर्टेक्स विल एक्ट नेक्स्ट ना. इट विल गिव आउट कॉर्टिजोल. Cortisol continuous what do I say release will basically activate lymphocytes. उसके बाद lymphocytes particular types T cells B cells get activated. उसके बाद hippocampal cell degeneration will take place. Auditory information processing AAC Slimer. ओके ऑलराइट वी स्टार्ट विद द ऑडिटरी. क्या कहते हैं इसको? ऑडिटरी नर्व कोक्लियर न्यूक्लियाई. यहाँ पे आपको ऑर्गन ऑफ कॉटाई भी दिया है. इट विल स्टार्ट विद द ऑर्गन ऑफ कॉटाई. ठीक है एंड इट विल एंड विद द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स. दैट मीन्स ये नहीं हो सकता. ठीक है ये भी नहीं हो सकता. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अगेन यू हैव टू चूज बिटवीन टू ऑप्शंस. व्हाट विल हैपन? ए सी स्लाइमा राइट. ऑर्गन ऑफ कॉटाई के बाद कहाँ पे फिर कोक्लियर न्यूक्लियाई के पास या
After cochlear nuclei, what will happen? Inferior colliculus, then medial geniculate nucleus, and then finally C and E in the end. Option C will be correct over here. ठीक है? Okay. आई ईयर सबका सीक्वेंस पूछा है guys. कुछ नहीं, like you have done this 100 times in the class. And it's so sad when students who get questions class correct in the class and the same questions they go and make mistakes in the exam. ठीक है? हाँ, correct. Let's go. सारे 14 match the following questions correct. Very, very good, Anvesh. Very good. Nothing. Never mind. Let's go. Visual information processing. See again. First of all, they've again put like they've put organ of Corti where the transduction takes place. यहाँ भी retina दिया है जहाँ पे transduction होती है. देखिए, first of all, you need to understand कि visual receptor को stimulate होना है ना, तो it starts with E. Again, you will eliminate these two. आपको दो ऑप्शंस के बीच में चूज करना है. Stimulation of visual receptor. उसके बाद information has to go through this retina. EC. Okay, that is your answer right there. Option B. You will not waste time. So E and C, and then geniculate nucleus will send it. Then information reaches to extrastriate cortex. नहीं. Huh? What information? Inferior. हाँ, correct. Because these are cortices. All right. यहाँ पे last में information जाएगी. According to Bhagavad Gita, we have done this in the previous analysis classes as well. अभ्यास से शीघ्र है ध्यान नहीं ज्ञान. ओके, ज्ञान से बेटर है ध्यान, एंड देन ध्यान से भी बेटर है फलों का परित्याग, एंड उससे भी बेटर है शांति. सो हाउ डू वी स्टार्ट? वी स्टार्ट विद अभ्यास एंड वी एंड विद शांति. Okay, so they have given Eastern also. सब पूछा है. I think it's an easy paper. It's a good paper. Out of syllabus कुछ नहीं है. So we start with अभ्यास, उसके बाद ज्ञान. So C D. Okay, option B is correct. C D B A. That's correct. Wow, this is good question. चलो, अरे वाह. Arrange the following in increasing order of structuredness. ये question it's been manipulated. आपको याद है increasing order of projective ability आपको पूछ रहा है. Actually decreasing order of projective ability आपको पूछ रहा है. ठीक है? Decreasing order of projective ability आपको ये पूछ रहा है और कुछ नहीं. Increasing structuredness. सो डिक्रीजिंग में आप सबसे मैक्सिमम प्रोजेक्टिव एबिलिटी या अनस्ट्रक्चर्डनेस किसकी है? रोशाक. It's got to start with Rorschach and it's got to end with MMPI. So where does it start with C and end with D? Okay, in these two options, right? These are eliminated. See, after Rorschach, it will be TAT. After that, it will be word association test. Word association test is still structured. So option D will be our correct answer. की मोस्टली डिसेंट ही है. Okay, James Lange theory of emotions, what happens? Now, this was one difficult question in the whole paper. Okay, इसमें आपने गलती की है तो कोई बात नहीं, I'll not scold. One difficult question in the whole paper, I feel. चलिए. So here we start off with um here we start off with what? Interpreted. The emotion producing situation is interpreted by the cortex. मतलब सबसे पहले emotion producing situation cortex पे आपके आता है. उसके बाद क्या होता है? Then we go ahead and we signal changes in the peripheral nervous system. उसके बाद क्या होता है? That's going to go ahead and excite the visceral changes in the body. Physiological changes आएंगी body में. उसके बाद क्या होगा? Then again the brain will receive sensory feedback whatever is occurring through the peripheral nervous system in the body. उसके बाद क्या होगा? Then we will finally feel emotions. Option A will definitely be your last option and option A here is ये option A correct. ये जो A वाला है ये last में ही आएगा. That just helps you eliminate option B.
Okay, this is a very vague. So these statement one, statement two questions are not great in my opinion. इनका format जो है, it's not, like I preferred the original assertion reason questions. Life course, persistent antisocial behavior occurs during adulthood. Not for everybody. Not for everybody. Adolescence, limited antisocial behavior occurs due to maturity gap. Okay, possible. So here this doesn't seem correct and this seems correct, लेकिन ये subjective है, ये किसी theory से related नहीं है. This doesn't seem like a good quality question. So statement one is correct and statement one is incorrect and statement two is correct. Option D is right. ओके, दिस इज क्वाइट सब्जेक्टिव. मतलब ये एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव है. अडल्ट्स को गुस्सा नहीं आता, अडोलेसेंट्स को गुस्सा आता है. मे बी दे हैव अडोलेसेंट किड्स एंड दे आर लाइक, नाउ लेट मी टीच देम अ लेसन. चलिए, now here these are quite easy. Let's see what is happening here. Stress is experienced in relatively ordinary life event, daily hassles. Again, health psychology. Any life event that requires people to change or adapt can result in stress. Same Holmes and Rahe ki theory. Same. Both statements are true. Both statements are true. यहाँ पे कुछ subjective नहीं है. This is objectively correct. These are the new assertion reasons. I hope not. Now this is a good quality question. ठीक है. अरे यार, कितना तो पूछा है यूनिट 10 का. कौन बोल रहा था यूनिट 10 is not there? यूनिट 10, यूनिट 1, everything they've asked. चलिए. Being marginalized also means you are discriminated. This would mean that each time somebody is marginalized, they have definitely been discriminated against. ठीक है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट कह रही है कि marginalize होने का मतलब है कि आपके साथ discrimination हुआ है. नॉट करेक्ट. मार्जिनलाइज इंडिविजुअल कभी रेफ्यूजी भी होता है जो वॉर कंडीशंस की वजह से अपने घर से डिस्प्लेस हो जाता है. ठीक है. जरूरी नहीं है कि किसी ने आपके साथ डिस्क्रिमिनेट किया है. अभी आप कहेंगे कि जिन्होंने वॉर किया है गवर्नमेंट ने आपके साथ डिस्क्रिमिनेट किया है. ऐसा नहीं. डिस्क्रिमिनेशन इज अ सोशल फिनोमिनन विच इज आउट ऑफ प्रेजुडिस. ठीक है. तो ये करेक्ट नहीं है. But then sometimes you see what happens to people who belong to lower caste groups or what happens to people who belong to a different community. So they may be isolated due to discrimination. अब ऐसा नहीं है कि marginalization और discrimination related ही नहीं है. ऐसा भी नहीं है. ठीक है. तो दोनों statements गलत हैं और ये बिल्कुल this is absolutely correct. Both statements are incorrect. This is correct. Key is correct. No need to like. पेपर वन वाले वेग ही होते हैं. चलिए, लेट्स गो. चलो. एनी मोर डाउट्स हियर? एनी मोर डाउट्स? दिस करेक्ट. ये कैसे सही किया मैंने. वेरी प्राउड ऑफ यू. अहिली, यू हैव अ गुड स्कोर. 210 समथिंग ना. Anybody who got less than 200 this time, I am very disappointed. Paper was right, like if you did your classes properly, even just the complete your comprehensive course if you had followed. Very, very good. You will definitely get JRF. You will definitely get JRF. तो मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर डूइंग फॉर दोज ऑफ यू हु गॉट लेस देन 200. आई एम सॉरी. असर्शन एंड रीजन क्या हो रहा है यहाँ पे. काउंसलर्स जनरली फॉलो एक्लेक्टिक अप्रोच. ओके, करते हैं फॉलो. ओके, so that they can combine mix and match approaches which are suitable to a specific context. When counselor and client differ in their cultural background, it requires multicultural. Eclectic is not the same as multicultural. Multicultural counseling is when we try to understand their cultural context. दोनों स्टेटमेंट सही हैं, अलग अलग हैं. ऑप्शन बी सही. Okay. Drive reduction was proposed to explain the actions people take to reduce tension by created by needs. Human body maintains balance in physical status. Now here they have given option B, but I think यहाँ पे option A would be more appropriate because if you put why and because, this is a typical पुराने जमाने का net question where we reduce drives by fulfilling our needs because the body wants to maintain homeostasis. I don't think they will change though. Last year they had given an utter rubbish question on these motivational conflicts, लेकिन change नहीं किया उसका key.
They did not change the key later. This should be A. ठीक है? आप चाहो तो चैलेंज कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक चेंज करेंगे. आई डोंट थिंक चेंज करेंगे. आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? ए इज मोर अप्रोप्रिएट, मोर सूटेबल. दिया है कि ये दे रही है. बी. ए इज मोर सूटेबल. बाकी मिस्टेक्स नहीं है. Some questions are very subjective, so then that's that. It's not like key mistakes और नहीं है. चलिए, now we have our first nonsense paragraph. Second one is very, very easy. Did we do all of the questions? हाँ, done. चलो ठीक है. Investigator designs an experiment to see the effect of illumination level and duration of visual signal detectability of change in illumination in a dark room. 120 randomly selected students were male students only were selected. She decided to use low and high levels of illumination at three levels of duration, 30, 50 and 70 milliseconds through an electric chronoscopic instrument. The investigator used separate group designs for various combination of treatments. These participants were required to press a yes button if they detect the signal, a no button. This is a signal detection experiment basically. Okay, or reaction time experiment. Each participant was given a total of 50 trials, 10 signals were randomly presented, proportions of hits and false alarms was computed and then were analyzed. There are a lot of flaws with this paragraph. ना ये paragraph clearly कुछ कहता है, ना number of levels, नहीं number of levels छोड़ो आप, number of levels is clear. But then it doesn't give a lot of specific information that is required to understand things. ठीक है? तो दो questions यहाँ पे काफी simple हैं, बाकी के थोड़े से confusing हैं. आइडेंटिफाई द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. देखिए रैंडमाइज ग्रुप तो नहीं है. वी आर नॉट कंबाइनिंग द 6 लेवल्स रैंडमली एंड गिविंग देम टू सब्जेक्ट. सिंगल फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर है. बिटवीन ग्रुप डिजाइन. ओके, so between group design it is not a within group because there are two independent variables which are categorical in nature. So factorial or a multi-factor design. चलो इसके बाद क्या दिया है? इसके बाद दिया है, क्या दिया है? Which were what type of independent? It should have been, say अब illumination low or high में they have not actually given कि low कितना, what amount of light, and high is what amount of light. But they have given here both for fixed factors. I suppose that's because इन्होंने क्या किया है? They have said कि dim light was maintained, ambience maintain की गई थी, ठीक है? So a certain amount of light was maintained to begin with and उसी को vary किया गया. So both can be called fixed factors in that sense. ये की कह रही है. You can still explore and check. See the milliseconds वाला तो definitely, right? Duration was definitely a fixed factor. Illumination level, since it first of all says कि ambience was at a particular level, then I suppose it is varied within a fixed range. But they should have mentioned the fixed range. Fixed range को mention करना चाहिए. Like when we say drug dosage low, high and all of that, na? Low, medium, high, we give 20 milligrams, 30 milligrams, then we know that it is a fixed factor. This here I am still thinking कि जो है illumination low and high, how is it like fixed? There are levels which are set, but what do the levels indicate? तो paragraph क्या कहना चाहता है? It's a bad paragraph. This person does not have good knowledge of research, I can guarantee and give. Person does not understand research very well. How many hypotheses the design will allow to be verified? Again, this is from this person's head. इनके दिमाग से है ये question. Very, very subjective. If I want, I can actually verify 6 hypotheses also by combining the different conditions. मेरी मर्जी है यार. If I want, I can create 20 different hypotheses or at least 6. But the thing here is, इनको mention करना चाहिए. देखिए, they have given answer as 3. So what I am assuming is दो अलग hypotheses का mention किया है and he should have said how many alternative.
Because for every alternative hypothesis, I also have a null hypothesis. So that could mean 4, that could mean 7, that could mean anything. ये काफी subjective question है. अब 3 कैसे यहाँ पे appropriate होता है? जो independent variable 1 है या independent variable A है, which is levels of illumination, इसके लिए separate hypothesis है. ठीक है? And independent variable B के लिए क्या है? Which is duration. इसके लिए separate hypothesis है. Now, since this is a multi-factor design or a factorial design, there is definitely going to be an interaction hypothesis as well. That gives us 3 alternative hypotheses to verify. So that makes sense. ठीक है? That makes sense. Previous question, I still want to check again. चलिए, ये ठीक है. Can we challenge this, ma'am? नहीं, I don't think they will change. You can challenge. I don't think they will change because there is a justification कि दो hypotheses का mention है और ये common sense है कि multi factor या factorial design में और एक आप check कर सकते हैं. In the sense interaction effect will be checked ना. That can be another. That can be another random fixed wala. I will check once again, Stuti. If we find proof, then we'll try to challenge it. Find the degrees of freedom of error term. Very, very easy. Between group design में error कैसे find out करते हैं? Error degrees of freedom. Error degrees of freedom is basically n minus k, yeah, which is 120 minus 6, which is 144. And sorry, 114. What am I saying? 114, not 144. 120 minus 6 is 114 only. चलिए, लेट्स गो, लेट्स गो. पैराग्राफ इज नॉट ग्रेट. पैराग्राफ अच्छा नहीं है. कितने सारे ऑप्शंस हैं. फैक्टर एनालिसिस है, रिग्रेशन डिजाइन है, जो मर्जी है आप पूछो. क्या बेकार की चीजें आप पूछ रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? आई डोंट नो. Okay, the other one is, oh my god, that's just a reading passage. Okay, identify the variables that were controlled. This person does not know what control variable means. Gender and ambient illumination. But frequency of signal is also controlled, na? It is at random periods. If this is randomly presented, then it is controlled. ठीक है? ये भी controlled है, ये भी controlled है. Gender actually controlled नहीं है because it is only male. This person is committing a gender bias conducting this study. तो इसमें आप फिर से चैलेंज कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इज रैंडमली वेरिएड. लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन तो है ही. लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, एम्बियंट इल्यूमिनेशन. I feel so bad for this person who has made. They have given this as key में ऑप्शन सी करेक्ट दिया है. जेंडर इज कंट्रोल्ड एंड एम्बियंट इल्यूमिनेशन इज कंट्रोल्ड. It should have been frequency of signal and then level of illumination नहीं होगा actually because level of illumination आपका independent variable है. Independent variable कभी control variable नहीं होता है. It should have been frequency of signal and ambient illumination. ठीक है? Okay? So I suppose C is okay here. Although gender is not well controlled. If you only take one gender, उसको control नहीं कहते. Controlling gender as a variable means having equal number of males and females in both groups so that we don't have any disparity between the two groups. This person, I don't know. Level of illumination बिल्कुल नहीं होगा. तो यहाँ पे होना चाहिए था frequency of signal and ambient illumination. If you have chosen gender and ambient illumination, ठीक है. I got this, that only, Stuti. You got it right. That's why you're like, let's not change, let's not change. Chalo, theek hai. After this, what do we do? Okay, now you have your Zimbardo ka experiment. Honestly, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे passage. You did not need to read the passage. Okay, let's go ahead and do the questions. Zimbardo, Stanford prison study was done by Zimbardo. Option B is correct. Experiment को क्यों रोका गया? Because it was too difficult for the, you know, prisoners felt upset and humiliated. इनके लिए काफी difficult था. इनका mental breakdown हो गया. So they were not able to take it anymore. So the experiment ended. अरे यार, it's just a passage. It's just a passage.
Just like I don't know. ओके, इट्स लाइक वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है ना पेपर वन में, इट्स लाइक दैट. एंड इट्स क्लियरली सॉर्ट ऑफ स्टेटेड, आपके सारे आंसर्स पैसेज में हैं. आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, आपने ये कभी पढ़ा भी नहीं है, पैसेज पढ़ के आप आंसर कर सकते हो. व्हाट वाज एक्चुअली द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? Okay, the experiment caused a lot of changes in ethical guidelines because इसने ethical boundaries बेचारे participants की काफी क्रॉस कर दी थी. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है. ऑप्शन सी इज ओनली. Okay, this shows that we study, that we behave according to our rules. Option C is correct here. The study shows that we behave according to our social rules and our designated roles. Last question. This experiment is known as the Stanford Prison Study. Option B is correct. ठीक है. With that we have discussed everything. आपके पास 3 keys हैं जो आप challenge कर सकते हैं. Out of that 2 they will definitely have to overturn वो जो pro social behavior दिया है. Bystander effect or diffusion of responsibility does not lead to pro social behavior. In fact, it turns people away from pro social behavior. It leads to bystanders apathy. तो वो पक्का गलत है. बैरन देखिए social psychology, वहां आपको मिल जाएगा. And then you have your aptitude दिया है, aptitude नहीं है, achievement है. You will find it in any general psychology book also, any testing book also you'll find in AK Singh also, you'll find in, I think you'll find in NCERT also. ठीक है. तो हल का क्वेश्चन भी गलत है. आप ट्राई कर सकते हैं, but I don't think they'll change. Should be A, there they have given B, but I don't think they'll change. With that, we are done with the exam analysis. And if you're my learner and if you did not get 200, I just want to ask why. Okay, that's about it. I hope you will find this class useful. And I hope you'll come back to this class and to check the keys or whatever that you need. And I hope that you will understand what mistakes you made or what you did well. All right, that's about it. I am an educator on UNACADEMY. In fact, I'm the top educator for psychology for NTA UGC-NET. I've helped many people achieve their dream of clearing JRF. If you want to do that too, you can come join me. You can install the app, and then on Unacademy, if you want to come do the course with me, you can simply go for the plus subscription. And in the plus subscription, please use the code, not please, if you want to join, use the code Hafsa Live. All right. This will give you a 10% off. Depending on what time of the year it is and whether it is discount season, you can get up to a 20% off as well. All right. Hafsa Live or HAF10 if you want to come learn with me and make sure to top these exams. That's about it from me. बताइए अब आपने क्या किया है and then I'll go. थैंक्स मैम. कुछ क्वेश्चन सिर्फ इसलिए गलत हुए कि इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं हो सकता. ऐसे नहीं सोचते अन्वेश. पेपर वन, एनीबडी यू check ask people. मैम जो चैलेंज करेंगे उनको मिलेगा या सबको मिलेगा? जो चैलेंज करेंगे उन्हीं को तो मिलेगा, सबको नहीं मिलता है. मैम 184 इन अनरिजर्व कैटेगरी. नेट का अच्छा चांस है चांस है नेट का, है चांस. ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. चलिए अब खत्म कर देते हैं क्लास. आई होप यू गाइज हैड फन. आई हैड अ लॉट ऑफ फन डिस्कसिंग दिस विद यू. हैव अ ग्रेट डे अहेड. आई विल सी यू ऑन अनअकैडमी. बाय बाय. बाय. नो, नो बाय. बाय गाइज.